ओके जी, अब जो पेपर है ये है अक्टूबर नवंबर 2018. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस पेपर. Computers use a character set to convert text into binary. One character set that can be used is ASCII. Each letter in ASCII can also be represented as a denary value. The word bus has the denary value. ये उसने कुछ values दे दी हैं ASCII code. ठीक है, no need to memorize them. Now convert the denary value into 8-bit binary values. ठीक है जी, ओके जी. नाउ आई आस्क यू टू सॉल्व इट. ठीक है, आई विल जस्ट वेट. सो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू एट द टॉप. आप जी 1 2 4 8 16 सर 0 1 0 0 0 0 1 0 32 64 128. ओके बेटा, देख लेते हैं. 66 बनाना है तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. यस, 64 and 2 make 66. ठीक है, तो ये rest of the values will be 0. So we only add those places. ठीक है ना, वहां पे हम 1 लिखेंगे which make up 66, जिनको ऐड करने से आपके पास 66 आ जाएगा. Next is 85. So 128 will not be included. 64 can be. 32, no, that will not be, because if I add 32, it will become 96. That exceeds 85. So this will not be included. 16, yes, 16 can be added. Okay. And then we cannot add 8. That will exceed the value. 4, yes, 4 can be added. And then we can add, this will make 84 and 1 85. Now 83, for 83 68, ये तो आ रहा है साथ. ठीक है, 1 will be there. तो ये आपके पास बन गया, it's 82 82 84 85. ठीक है, rest will be 0. Okay जी, that's the solution. Right. Now it says each letter in ASCII can also be represented as a hexadecimal values. Convert, ये 3 उसने values दे दी, K, E, Y. Convert the 3 8-bit binary values into hexadecimal. Okay, as you know, for hexadecimal you will have to make groups of 2. Each group will have 4 bits. अगर इसमें 8 है तो जाहिर बात है 2 ही ग्रुप बन रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो ग्रुप्स ज्यादा बन जाएंगे. ठीक है, ओके. तो इसमें ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ये इट विल बिकम, अगर इसके ऊपर हम देखें तो 4b. ठीक है, इट विल बिकम 4b क्योंकि वो बन रहा है 11. ये 11 बन रहा है and 11 is b. If we divide it in 2 parts, तो ये बन जाएगा 4 और 1 2 5 4 5. अच्छा, in the same way, if we divide it in 2 parts, this will become 1 2 4. ये 5 बन जाएगा. On the left side, on the right side, it will become 9. Okay जी, that is the hexadecimal. ठीक है, ये 5 होगा and this one will be 9. And in the same way ये सारे लेटर represent होगा. Okay जी, now let's move to the next question. Give 3 other uses of hexadecimal notation in computer sciences. ठीक है, इसके यूजेस बताने हैं जी. एक तो HTML कलर कोड्स. ठीक है, हमने पढ़ा था इन फर्स्ट चैप्टर. और इसके अलावा शोइंग एरर मैसेजेस, मैक एड्रेसेस, और असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी डंप्स. ओके, देयर आर लॉट ऑफ यूजेस, सो यू कैन राइट ओनली 3 of them, 3 from them.
State two benefits of using hexadecimal notation to represent binary value. अभी यूज क्यों करते हैं? ठीक है, ऊपर तो यूजेस बता दी, अभी यूज क्यों करते हैं जी? एक तो ये है कि इट्स इजियर टू रीड, ठीक है, या बाय ह्यूमन, या इसको कह सकते हैं इज इजियर टू रिमेंबर एज वेल बिकॉज द कोड आर शॉर्टर, ठीक है ना, और द यूजर विल मेक फ्यू एरर्स टू राइट इट, ठीक है ना, जब आप इसको लिखेंगे तो लेस चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, तो ये इसमें यू कैन राइट एनी टू benefits. In question 2, a computer uses RAM and ROM to store data. The table contains 3 statements about RAM or ROM. तो इसमें आपने बताना है जी, take to show whether each statement describes RAM or ROM. तो first क्या है जी, stores the program and data that are currently in use. What do you say? क्या आना चाहिए? It's RAM. Okay. इसके बाद जी, used to boot up the computer when power is turned on. boot up process जितना भी होता है ये ROM से होता है, ठीक है. And contents are retained when power is turned off. That means it is talking about non-volatile nature and it is also ROM, ठीक है. RAM के content जो होते हैं ये they disappear when the power is switched off, ठीक है. And in next part, circle the storage category that includes both RAM and ROM. किस में आते हैं जी दोनों, RAM और ROM? They are in primary. Explain what is meant by offline storage. Offline storage क्या होती है? Basically, offline storage is non-volatile storage. Non-volatile means it can store the data permanently, ठीक है ना? That can be disconnected or removed from the computer. ये भी आपको बताया था इसमें, ठीक है. For example, you can use CDs, DVDs, ठीक है ना, where you can write the data. A CD rewritable जो होती है, या writable. You write the data and you can put it away from your computer. That's why it is called offline storage, ठीक है. जैसे USB भी होती है. On a USB flash memory, you store the data and you can put it away. Okay. Next is very simple question. ये आपको बताया हुआ है किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन यकीनन आप लोग भूले हुए होंगे. तो देखो इसमें यू आर गिवन विद अ सर्टेन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज 4 पार्ट्स, लेकिन वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ. विंडो इज क्लोज्ड एंड फॉर दिस आपको यू विल हैव टू गेट 2 इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. कौन कौन सी 2 इंफॉर्मेशन है? वन, दैट विंडो इज क्लोज्ड की वैल्यू क्या है, बाइनरी वैल्यू, एंड सेकेंडली इट इज रिप्रेजेंटेड विद W, ठीक है. दैट मीन्स W इक्वल टू 0, सो यू कैन सिंपली राइट W इक्वल टू 0 हियर, ठीक है. जस्ट रिप्लेस द वैल्यू. देन वी हैव एंड इन बिटवीन, दैट मीन्स दिस इज एंड गेट, and then temperature is greater than equal to 26. Just look at the temperature. Oh, sorry, this is not the greater, this one is greater value, and it has binary value 1 and it is represented with T. Okay, if the binary value is 1, so you can, so it's up to you, you may or may not write it, ठीक है. आप लिख भी दें, कोई मसला नहीं है. If you don't write, skip it, okay, no problem at all, but you will have to write whenever there is a binary value 0. Now the temperature is less than 26, so less than 26 है, so now it has a 0 value, ठीक है. So now I should write T equal to 0, because for 0 I will apply a NOT gate, ठीक है. And then and इसका मुझे मैं नीचे लिख देता हूँ.
Should take the eraser. So T0 because it was less than 26 and from the table I got the value 0. और अभी जो है humidity greater than 50 and greater than 50 humidity is 1 and it is represented with H. So these are the two values. So you can write simply H. Yeah, ji, we have converted it into sort of mathematical form. ठीक है? So both have an OR gate in between. ठीक है? Now you can easily draw a logic circuit using this information. ये मेरे पास है. I put it here. ये मैं ऊपर वाले erase कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने लॉजिक सर्किट बनाना है. Okay, now I already have this information. W, 0 and T. So for 0 you will put NOT gate, always remember this. And T. Okay, and then we have OR in between. Now let's make the other part. Other part is T, NOT and H. Now this time T NOT. So T has been used in both the parts of this logic expression and H. So ye dekho, it is also linked with this one. This whole part was linked with R and this whole part was linked with R as well. So R is in between. Okay. So this represented the first part, ये वाला जो था, and ये मैं दूसरा इससे बनाता हूँ. T was common, ठीक है? So this was the other part. So this is how you can draw a logic circuit from a given statement. ठीक है? Got it? The next part, question 4 is identify 3 security issues that can put a computer system at risk. किन किन से हो सकते हैं जी रिस्क? कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जी रिस्क की? फर्स्ट जो होता है आपके पास वेरी कॉमन एंड दैट इज वायरस. ठीक है? बिकॉज वायरस कैन डिलीट योर डेटा, इट कैन करप्ट योर डेटा, सो इट्स अ बिग थ्रेट फॉर योर डेटा. ठीक है? एंड इवन स्पाईवेयर, ठीक है, वो दैट इज आल्सो अ थ्रेट. और इसके अलावा फिशिंग, फॉर्मिंग, हैकिंग, ठीक है ना, और डाउनलोडिंग सम सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज. सो दीज आर डिफरेंट security issues which can make your computer, you can put your computer at risk. Okay? Explain how a firewall can help to protect computer system from security issues. Okay? Now this is the same question. Firewall, ये पहले भी एक पेपर में आ चुका है. तो किस तरह वो करता है प्रोटेक्ट फायरवॉल जी? तो बेसिकली firewall is just like a filter. Whenever any data enters into your computer, the firewall stands in the way. Okay, so firewall has a certain rule. It is just like a security checkpoint. Okay, whenever a person enters the security checkpoint, so the person is asked to identify himself. Okay, or identify itself. The firewall does the same. Whenever data, if you are using internet and your computer is connected with internet, so all the data coming from internet will pass through firewall first and then will enter your computer. Okay, so firewall is just like a filter. It has a set of criteria or rules. ठीक है ना? तो इसमें it checks whether the incoming data or the traffic meets those rules or criteria. Okay, if that a certain data does not meet the criteria, so that data is blocked straight away. Okay, or it can also warn the user
of any unauthorized software that wants to get access to your computer. ठीक है, कोई मैसेज भी आ जाता है, ओके जी ये सॉफ्टवेयर है वांट्स टू गेट एक्सेस टू योर कंप्यूटर. सो ये सारा फायरवॉल का वो है मेथड है, हाउ इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर. ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहां तक? ओके